हैवी फेस, सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है जो अगेंस्ट, लेकिन क्या ये गुड पेशेंट है फॉर द फिगर? तो इसका मतलब है कि अगर ये फॉर द फिगर नहीं है, बट द सेकेंड ऑप्शन, या तो हम इसके लिए कोई हेल्दी बेस्ड दवाई लाइक आईकू, वीकू और मेबी Okay. इंस्टेंट रिजल्ट है, तो उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रेड। ये हम क्या कर सकते हैं, रीपोजिशन। सारी कहानी जो है थ्रेड में किस चीज़ की है, रीपोजिशनिंग ऑफ फैट। अगर आप रीपोजिशनिंग ऑफ फैट अच्छी कर लेते हैं तो आपको, इसका मतलब है यू विल नॉट बी नीडिंग फिलर्स, क्योंकि आपने जो उसकी एग्जिस्टिंग फैट है, आवाज़ नहीं आती। अच्छा, अभी जो थ्रेड्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मुझे इसलिए बुलाया गया ताकि मैं आपको थोड़ी सी उसकी बता दूँ द नेचर ऑफ द थ्रेड, वो कौन सा यूज़ करेंगे. Aptos is a brand, the one that he is using. He will be using the Excellence Visage and thread method for the lower face. Aptos जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देता है थ्रेड्स में, इसीलिए कन्फ्यूजन होती है जब भी आप लोग Aptos की वर्कशॉप अटेंड करते हो. When we talk about the methods, एक्सीलेंस विसाज, लाइट लिफ्ट, ये सारे मुख्तलिफ 35 किस्म के 35 इनके मेथड्स हैं, 50 सोल्यूशंस हैं. ठीक है, हर एरिया को वो सेपरेटली एड्रेस करते हैं. नेक का वो सेपरेट थ्रेड है जिसको वो नीडल मेथड कहा जाता है. लोअर फेस जहाँ पे आपको रिट्रैक्शन और रीपोजिशनिंग ऑफ टिश्यू चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड अ थ्रेड मेथड. एंड अगर ओवरऑल फेस आपने करना है, वो एक्सीलेंस विसाज मेथड है जो कि एक बहुत स्पेशल थ्रेड है. द कंपोजिशन ऑफ द थ्रेड इज़ पॉलीकैप्रोलैक्टोन पॉलीलैक्टिक एसिड और उसकी कोटिंग हेल्यूरोनिक एसिड की है. ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एडिशनल पॉइंट है एप्टॉस का. अच्छा, अब देखो एक बड़ी मज़ेदार बात है, जब हम बात करते हैं सिल्वेट की तो उसमें क्या चीज़ है, पॉलीलैक्टिक एसिड और पॉलीलैक्टिक ग्लाइकोटाइड्स, और जबकि जो हमारे पास है एप्टोस, इट्स कम्बिनेशन ऑफ PCl और PLL. और जो एडिशनल चीज़ उन्होंने की है वो क्या चीज़ है, वो हाइलुरोनिक एसिड. अब ये देखो कि जितने फिलर्स हैं उसके भी वही मॉलिक्यूल हैं और जो हमारे थ्रेड्स हैं वो भी वही मॉलिक्यूल हैं. तो जो थ्रेड्स हैं अल्टीमेटली जब ये डिज़ोल्व होना शुरू होते हैं तो दे विल फॉर्म स्ट्रैंड्स ऑफ और सॉलिड स्ट्रैंड्स ऑफ फिलर्स, एंड inflammatory response around these threads will create lot of collagen columns. क्या कहते हैं कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का है. तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है कि इसका जब अफेक्ट, यानी कि जो इसका पुलिंग या रीपोजिशनिंग अफेक्ट ख़त्म होगा तो उसी वक्त कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेशन अफेक्ट वो शुरू हो जाएगा. जब हम थ्रेड्स को क्लासीफाई करते हैं तो थ्रेड्स को हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं, जिस तरह फिलर्स को करते हैं ना, वॉल्यूमिनाइजर्स एंड बायोस्टिमुलेटर्स. इसी तरह जो थ्रेड्स हैं उनकी भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक जो मैकेनिकल इफेक्ट देते हैं और एक जो साथ में मैकेनिकल प्लस बायोस्टिमुलेटरी इफेक्ट है. तो ये जो 2 थ्रेड्स हैं हमारे पास, वो एप्टॉस और सिल्वेट दोनों जो है ना, इनका दोनों इफेक्ट है कि ये बायोस्टिमुलेटरी भी हैं, एट द सेम टाइम मैकेनिकल रीपोजिशनिंग भी साथ. जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सूचर्स है. एक होती है फैब्रिकेशन. आर यू रेडी? फैब्रिकेशन इज इट रेडी? ओके, सॉरी, बस आई एम एंडिंग. इट्स आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द barb sutures. You continue. Okay. अच्छा, जो एक बात याद रखें, क्योंकि ना एप्टॉस के बहुत सारे थ्रेड्स हैं, आपने जो याद रखना है ना, जो फेस पे हम नॉर्मली यूज़ करेंगे वो है एक्सीलेंस विजाज. अगर एक्सीलेंस विजाज विदाउट हाइलुरोनिक एसिड है तो वो एक्सीलेंस विजाज सिंपल, अगर विद हाइलुरोनिक एसिड है तो वो एक्सीलेंस का लफ्ज़ आ गया. इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है कि ये कैनुला के साथ है, जैसे आप कॉक थ्रेड्स यूज़ करते हैं. इसका क्या एडिशनल बेनिफिट है कि वेन एवर डू यू वांट कि आपने थ्रेड भी करना है, आपको लिफ्ट भी चाहिए, प्लस आपको ब्रूज नहीं चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक. दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि जब नीडल से आप करते हैं, मैं जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हूँ, नीडल इज़ ब्लाइंड, इट कैन हिट एनी वेसल, एंड
if you bruise you will lose. तो इसलिए जब कभी ऐसा काम हो तो आपने क्या करना है, आपने कौन सा थ्रेड यूज़ करना है जो कैनुला के साथ हो. So you are ready? Yeah. So who's doing threads in their practices? Just one? Two? No, they all are thread masters. Don't I worry. want to see everyone here. Raise your hands. Raise your hands. So what I'm trying to do is, I'm trying to give you a glimpse of what I do in my practice when I prep a case like her. Can we zoom Zoom. zoom in? Yeah. So you can see that she have a very beautiful young face, but there is a bit of jowling and she's a heavy tissue case. So that means challenging to lift all that up. So this is what we need. And she has a bit of volume loss here as well. This is obvious here under her eyes, the tear trough. So what I'm trying to do is, I'm going to use a very unique, specific type of threads. It's called the Excellence Visage. This is 5M5. It's loaded on a cannula, so just entry point, no exit points. And that will help me to lift or armor the face. And remember, this is a PLLA-CL hyaluronic acid blend, what means more collagen deposition, more rejuvenation for the next 20 months. And then I'm going to add another type of thread for the jowl. It's still an Aptos thread. It's light left thread, and it helped me to create the lift that I need to the jowls and the lower face. I So think it's that a beautiful combo. yeah. Beautiful combo for a heavy face. So actually what we can do in some patients, ज़रूरी नहीं है कि आप एक थ्रेड के ऊपर स्टक हो जाए. आप यू कैन कस्टमाइज, जिस तरह फिलर्स आप लो जी प्राइम हाई जी प्राइम कंबाइन कर लेते हैं ना, इसी तरह थ्रेड्स की डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, आप उनको भी कंबाइन कर सकते हैं. इस पेशेंट में कीपिंग हर इन So माइंड. the patient, she's already numb. What it means that I did the anesthesia before, which there is epinephrine in it as well, so it can stay for some time and reduce the risk of bruising. And what I'm going to do is, I'm going to start. Light? It's okay. I'm going to start here with the cheeks. And what I'm trying to do is, Vicky. it's okay, I can see. It's You can fine. I can see. Yeah. So everyone can see me here. So I'm going with the thread in the subcutaneous part, and I'm bending the thread or the cannula by my other hand. So the cannula, it's straight, but you bend it because you want to create a curve that holds the tissues. You don't keep the tissues on the barbs. And this is a multi-directional thread. So it hooks the tissues in two ways. So you cannot move the tissues in any direction. It's not one directional, it's multi-directional points. I think this is only multi-directional thread. Yes, there is no in the market so Yeah. far. And that means that if you have any short limb, it means you have equivalent, equal fixation to the tissues. And Can you when I go please out, repeat it again? This is very important thing. when you have any cut or any break in any type of barbed sutures that you use, what is happening is one limb has more fixators and another limb is shorter. Because you cut it, it gets broken while you're inserting the thread. So what happens, you have unequal lifting results. But when you have every and single barb has two fixations, so it cannot move either this way, it's fixed to one single point, so it creates every and single one as knots, as if you're doing knots to every and single point on the thread. So you're fixing the whole unit. And then I pull back the tissues over with my other hand and remove the cannula, creating
redraping for the skin. And then I go in again. So again you are And deep. going in the opposite way. So what I'm trying to do is I'm trying to do like two brackets, just to hold the tissues in between. And then So I'm ये moving एक backward. repositioning of fat की एक best example है. Remember, this is a 19 centimeter thread. So it means you can go in that area 3 times. So each thread is like 3 threads. It is not just one. This is finished. This is only just one thread. A So- bit of lifting. If you can see, can you sit a little bit? So you can see, big hand, तालियां Just तो बजाओ one यार. thread. That's just one. So with this just one thread, we created volume and we created lifting. But this is 10 threads in the pack. So I'm going to use the 10 on her. And even I'm adding 2 more. Are you okay? You're comfortable? No pain? All She right. is brave. She's brave, very brave. So can you tell That's us another one. what is depth of your cannula? Can It's you? subcutaneous, and you can work either deep subcutaneous or a little bit superficial if you want to create just lift. But if you want to create volume, you should go a bit deeper. When I mean by deeper, if you can zoom in here, I can see the cannula. It's not, Yes, it's quite deep. so it's a bit deep here. So whenever you need lift or volume reposition, so you have to go deep down, below the fat, Yes. to lift it up. Just to lift up the fat. I'm gonna use 3 threads on the cheek, the upper part, to create the volume. And then I'm using 2 in the lower face, and then I'm adding the thread method. So I'm pulling back. And take care, no hair should go inside with the thread. It's a source of contamination that can create infections later on. तो अगर आप देखें That's कि my सिर्फ third one. चिन में अपना सिर्फ इन्होंने चीक में 3 थ्रेड्स यूज़ किए, लेकिन अमाउंट ऑफ लिफ्ट यू कैन सी कि उससे जो लिफ्ट आई है उसका इम्पैक्ट सिर्फ चीक पे नहीं है, उसका इम्पैक्ट लोअर फेस पे भी है. कैन यू प्लीज? This is my other entry point. It's in front of the tragus. So I use this adhesion zone to create fixation and a lift as well. And again you are quite deep. No, I'm trying not to be deep here. The Because we position can't see your- forces you to be deep, but you don't have to be deep here. You just want to create lift. You don't want to create volume in that area. Excellent. So I think she needs a bit of volume here, Yeah. and then we can use, can you open up the thread? Yeah. So I want to create a bit of volume at the mid face here. ओ मौजां लग गईयां. एक और खुल गया जी. Hmm? So that's my 5th one, which means that it's the last of this side. And then I have another method, which is very nice to use. And I think it's very easy and straightforward. This is the thread method. And we call it thread blunt, because this is blunt. Actually, it doesn't poke through the gloves. It's a blunt one, but still has the ability to go through the skin if you need.
This So is very good thread. I go with both, No, and no, then I split them. it's a different thread, and it is called light lift Thread. light lift thread. It has 2 needles, or you can say blunt needles, and length of Yes. the thread is also quite long. So you go just parallel to the skin, very in the mid layer, not very superficial and not very deep. If I see that I'm a bit superficial, I Yeah. try to fix my entry point. And then I go until I reach the exit point. I'm sorry. अच्छा, इस थ्रेड में भी चूंकि ब्लंट नीडल है ना, तो इसमें भी ब्रूस के चांस काफ़ी कम है. बट इफ़ यू विल Scissors? पुश इट विग्रसली, यू कैन ट्रामाटाइज ए वेसल. सर इसकी बेस्ट बात ये है कि ये लैंसेट नीडल है. हाँ मतलब इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्लंट, हाँ इट्स अ लैंसेट नीडल. लैंसेट नीडल इसलिए ज़रूरी होती है कि वो ना तो बहुत शार्प होती है और ना बहुत ब्लंट होती है. तो बहुत सारे ऐसे Okay. मरीज़ जो कि आपके पास हाइफू या कोई और प्रोसीजर्स करा के आते हैं जहाँ पे Okay. फाइब्रोसिस बहुत होता है, सो लैंसेट नीडल उसको ईजिली पेनिट्रेट कर सकेगी. सेम यही मेथड जो आपको वो लोअर फेस के लिए दिखा रहे हैं, यही आप नेक पे भी कर सकते हैं विद द स्मॉलर थ्रेड्स, क्योंकि ये मिड चिन का जो टिश्यू या स्किन है, इसको आप ड्रेप करके टूवर्ड्स द पोस्टीरियर ऑलिक्यूलर लिगामेंट लेके आते हैं. So we're done now. What I'm doing is I'm trying to lift the tissues over the thread. And you just cut the rest of the threads. And voila, you're done. We need to sit her up. What are and- the chances of And see dimpling? this side compared to the other side. Then I'm going to finish the other side. Dimpling. Can you go back and Abdulaziz, sit? what are the chances of dimpling? You can get that, of course, if you're too superficial. But what I found out, when you use a cannula, it's almost impossible to go through the derms. Yeah. So No, the no. visage is a very safe one when it comes to dimples. But No, no, when just, it comes I to a am needle, I'm talking about this light lift. the light lift can produce dimples. But what I found out that this is a very soft, flexible material, that if a dimple is created, simple massage can just treat it. So can we zoom in? Straight करें, straight. You sit and zoom in. वाह जी वाह. So we created here a definition, contour, and elevation to the cheeks and lift to the jowls and the lower face. I think she's much less heavy, this part, than the other one, right? Dr. Humayun, please, yes. Dr. Aziz, Abdul Aziz. Yes. I'm Dr. Humayun over here. Now, this light lift, if I believe the double needle when you are using, I presume these are bidirectional as opposed to what you were using before. Yes. Because when you are using different. needle, all of them on one side would be on one Yes. direction. Yes. And this is lifting, Yes. right? Now, Yes. when these bidirectional started with the needles way back in 2002 and 3 with the contour threads, one of the things which would help to give a better lift and better engagement to the tissue is when you will go zigzag rather than going straight. So when you go zigzag, there are two things which can give the strength to the pull. One is the spiral and the number of the cogs or the barbs, and the other is if you go zigzag as opposed to straight, you will have a better engagement and much better lift. So what you're talking makes sense, and it does create a point when you go not in a straight line, but you cannot do that with a long needle. So if you try to do it, it has to be specifically to the tissues. But if you try to go this way, in an S manner or a curved way, when you apply your lift, that can create contour deformities later on. So it's better to have your way, the same thing, but in a curved manner. So when I applied the thread, I didn't go vertically straight.
what I did is I went down, then forward. No. So The last one, I took my time to do that to create as if I'm going zigzag, but in a long zigzag way. So you have a uniform lift of the tissues. That's my experience. okay. Next time, whenever you are doing, try this thing even in the subcutaneous, not very superficial, but in the sort of medium subcutaneous. All right. And if you try this thing, you would feel a little bit a reasonable lift with that as well. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. A big hand for Dr. you. Abdulaziz. Now he will perform off the camera, and we Yeah. will go to our next speaker. All right. I need Thank to you. remove the mic.